Okay, my screen is available to you. Okay, so we have seen how we can define a method, how we can implement the method, how we can prepare the body of the method, and then through the main method, how we can call your user defined method, parameterized method or non-parameterized method. Now return types. Methods can return certain values. Till this time, whatever discussion happened in that we haven't used a method which is returning something or anything. Now let us take this example. One more time, I am changing the name. So class name दूल्हे लिखा है यहाँ पर. My method name is again my method name. This method is expecting one integer parameter and we have this statement. Okay, यहाँ पर और कुछ लाइन भी हो सकती है कोडिंग में, but at the end, okay, at the end of the body of this method, there must be one return statement in case of a method returning certain value. क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में जा रहा है सब कुछ, तो बाहर जल्दी जाओ आप लोग. Integer x, this is a variable I have declared. Okay, and within the body of the method there may be number of lines or any what we can say coding available here, but what we need over here, what is important over here, at the end of the body of the method there should be return statement. Whatever the value that method is returning, not important, but there should be one return statement. If there is one return statement and something is returning by that method, then this comes under this type of method or a method which is returning something. Now in previous method, these methods are not returning anything. Because of that, we have this type void. If you remember over here, so here, okay, now this type is void because this method is not having any statement like return. Okay, this is the body of the method. यहाँ से start हुआ था body और complete body यहाँ तक है. So there is no return statement in the method. So that's why type of this method is void. And here you can see this method is returning 5 plus x, means some number this method is returning and that number is of type integer, and because of that this method is having type integer. Is it clear? So after declaring or defining this method, you have to mention type of the method. Is it clear? Or if you already know, then you can begin with type declaration of the method. As like your variable is having type, similarly your method is also having type. If there is no return statement, then method is of type void. If there is a return statement, whatever the type of value that method is returning, that type of method we can say. So this example returns the sum of method two parameter. Okay, what we have written over here, 5 plus x. Now 5 is from the same method and x is coming from the call. How you will decide which parameter belongs to which method? So this parameter 5 belongs to this method itself. It is present within the body itself. And this x is coming from, or value of x is coming from, not user. We can say here through the call. Through the call of the method. So here this is the call of the method. Okay, this is the calling part. अब मैंने उस कॉल को सेपरेट नहीं रखा है, प्रिंटफ स्टेटमेंट में दे दिया. सो व्हाट विल हैपन, दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड दिस वैल्यू विल कम अगेन बैक ओवर हियर. जहां से हमने कॉल रेज किया था उसी पोजीशन पर वैल्यू रिटर्न आएगा. दिस इज प्राइम इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट आई एम सेइंग, वी मेड अ कॉल टू दिस मेथड फ्रॉम हियर and whatever the operation will happen within the method after coming to the return statement, when this execution reach to this return statement, whatever the final outcome,
okay, or the return value. So here in this case return value will be, जैसे 3 को लेकर हमने कॉल किया था, so this 3 will be copied to this x and this x will be initialized with 3. Now 5 plus this x becomes 3, so 5 plus 3, 5 plus 3, 8. So final outcome is 8. So this return statement will return 8, but कहाँ return करेगा, जहां से हमने उसे कॉल किया था वहां return करेगा. So here 8 will get return and इस सब को हमने किसे पास करके रखा हुआ है, println को. So what will happen automatically, this 8 will get displayed. Is it clear? Is it clear? Any confusion? हम लोगों ने सिर्फ कॉलिंग का स्ट्रक्चर चेंज किया है. अभी तक हमने कॉल सेपरेट रखा था, अब हमने कॉल विद इन println लिखा है. अगर आपको ऐसा नहीं करना है, यू कैन डू दिस वे ऑल्सो. कैसे करेंगे हम लोग, इसको यहां से हटा देंगे, राइट, कंप्लीट. वी विल, यार ज्यादा ही ले रहे हैं. चलो ठीक है, कंट्रोल एक्स, और मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पर जो है इसे पेस्ट करूंगा और यहाँ पर नाउ आई मेड अ कॉल टू द मेथड. सिंपल कॉल मैंने किया यहाँ से मेथड को. नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन दिस मेथड विल कॉल. कॉल होने के बाद इसको यहाँ ढूंढा जाएगा. सो वी फाउंड दिस डेफिनेशन फॉर दिस कॉल फॉर हियर, क्योंकि ये माय मेथड है. सो हियर इज ऑल्सो माय मेथड. यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर भी एक पैरामीटर दिया है, और अब हमने यहाँ पर इंटीजर ही दिया है. तो यहाँ पर ये इस मेथड को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि रिस्पेक्टिव बॉडी ऑफ दिस मेथड इज दिस वन. सो दिस बॉडी विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड what outcome will generate, 5 plus 3, 8. Now 8 will return over here because there is a return statement, so some value will get return. तो return तो आएगा यहाँ पर, लेकिन हमने कुछ रखा ही नहीं. So what we need to do, integer a मैंने define कर दिया यहाँ पर, and what I will do simply a equals to, sorry, a equals to this my method. So what will happen now, this method will bring whatever the result of this method, that is 8, and this 8 will be passed on to this a, which is variable of type integer. तो इसका type और इस variable का type same है, so it can hold this value, right? Yes or no? And at the end I will simply pass a over here in println statement, so will be same thing. Is it clear? हम हर बार वेरिएबल को जब भी डिस्प्ले करते हैं वैल्यू को, हम लोग प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं. अगर हमने यहाँ पर कुछ मैसेज देना है तो मैसेज कैसे देंगे, इन डबल कोट आई विल राइट whatever the statement you want, this way, output like 8, I will get 8. So this is, simple method with return statement. Again we can have this another method which is having 2 parameters. This method needs 2 parameters. It means at the time of call I have to pass 2 parameters, 5 and 3. So 5 will be stored in x and 3 will be stored in y in this call. जैसे ही मैंने इसे कॉल किया, यहाँ पे मैंने इसे कॉल किया, that time what will happen, 5 will get copied to x and 3 will get copied to y. तो रिटर्न में मैंने किया यहाँ पर x plus y. So what will be the result, 5 plus 3 again 8, and this whole operation I have passed to this println method, so directly it will display the value. So this is what the thing we did this before. एक वेरिएबल लिया हमने, उस वेरिएबल में इस मेथड को कॉल पुट कर दिया, और इसका जो रिजल्ट होगा ये कैच किया जाएगा इस z में, एंड z हमने इसे पास कर दिया. ओके, सिमिलरली
ठीक है, इतना सफिशिएंट।